Hello everyone, welcome back to my channel. Wouldn't it be great for you to sit at your home just like you sit for your 9 to 5 job and earn in dollars? Why don't you work from home part-time initially for your own self and earn not in rupees but in US dollars? Doesn't that sound great? And just imagine the freedom it is going to give it to you. Interesting, right? 2022 है यार, डिजिटलाइजेशन का जमाना है. इंटरनेट, वेब3, क्रिप्टो, बिटकॉइन, NFTs और मेटावर्स एंड स्पेसएक्स भी अपना स्टारशिप मार्स पे जाने के लिए एकदम रेडी कर रहा है. सो आई मीन व्हाट एन इंटरेस्टिंग टाइम वी आर लिविंग इन. और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अपने कमरे में बैठ के सिर्फ इंडियन रुपीज में कमा सकते हैं, वो यूएस डॉलर्स में नहीं कमा सकते, which will give you many great added benefits that you will beat inflation, that you are gonna beat rupee falling against dollar. आप न्यूज में बहुत देखते होंगे, रुपीज गिर रहा है, रुपीज गिर रहा है, रुपीज गिर रहा है. तो गिर रहा है, हम उसका कुछ कर तो नहीं सकते. और गिर रहा है ऐसा है नहीं कि पहले के जमाने में होता था, बहुत टाइम पहले होता था कि रुपीज लाइक 1 rupee, we used to say ना 1 rupee was equal to $1. Now you think you can get to that era? You cannot. All right. So what can you do? Rupee will fall against dollar. It has continued to fall. It will continue to fall. So what can you do about it? Why don't you take this great opportunity of rupee falling against the dollar? Take this opportunity as an added advantage to you, and why don't you earn in dollars and get paid in rupees after the currency conversion? So that is what brings us to today's topic, that how to make money in dollars from India or anywhere in the world you are sitting. But first things first, stop expecting or thinking or running behind get rich quick scheme. There is no way for you to get rich quick. If you just search over the Google how to make money online, you will get tons of ways people claiming for you to make rich. Some of the examples are copy and paste YouTube videos and earn money. Upload files and whenever someone will upload, you will get a payout from it. Mobile apps in which you do something or other and get paid. So let me tell you that all these ways are irrelevant to what the reality of the world is and what and how the actual world will pay you in dollars. You obviously are not going to get rich by copy pasting a video or making someone else download something and getting paid in return of that. No, come on. So let's get serious. Only and only if you are putting value out there on the table for the people or the organization is the answer of why they will pay you in dollars. So how are you going to provide value? You need a set of skills in which you are good at, which you can deliver to them very well. Now that's the job for you to find out that what skill you are good at. Skill do you like? Which skill strikes you? Which skill puts that sparks in you? That is what you have to find for yourself. So once you have that figured out, let me tell you a few good skills which are worth learning. If you don't know them, you never know. You learn a skill, you go out, you don't know a skill, you go out, you learn a skill, and in the process you fall in love with that skill, right? Like how I started loving making videos and editing videos and uploading videos. I now love that. So that's what I do. So you learn a skill, you go out, you learn it, and you try. You don't know you will be successful at it. When you start learning a skill, you don't know what will it demand. आपको नहीं पता होता वो आपसे क्या मांगेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी. But once you start, then only you will get to know it. And once you start and getting to know it, you never know, you might fall in love with the process. और अगर आपको वो skill burden नहीं लगती है, then you know that this skill is for me. Once you have that figured out, let me tell you a few great skills which are worth learning, because these are great skills, and if you don't know them, you can learn them. And if you know all these skills which I would be listing further in the video, if you know them, you can just brush it up, polish it up, and make it even better. Like just be irreplaceable of that skill. So what my suggestion would be that अगर जो भी मैं skill आगे बताने वाला हूँ, अगर आपको उनमें से कोई भी skill नहीं आती है, so don't just skip this video or just go back and just start doing what you used to do. No, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा. आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो ना कि हाउ टू मेक मनी इन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया में बैठ के आप डॉलर्स में कैसे कमा सकते हो. तो आगे आने वाले जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, या फिर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कल और बाकी सारे यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखते होगे या देखोगे, वो सब ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों के आसपास आपको चीज़ें बता रहे हैं. जो चीज़ मैंने बताई होगी वो कल कोई और यूट्यूबर बताएगा, कल जिस किसी यूट्यूबर ने वो जो चीज़ बताई होगी वो मैं आज आपको बताऊंगा. सो इट कीप शफलिंग एंड जगलिंग बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. बट आप एक वीडियो देखते हो, 2 वीडियो देखोगे, 3 वीडियो देखोगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड लर्न इट. सो इफ एनी ऑफ द skills which you do not like or which you have not even done, just don't skip it कि ये मैं कर ही नहीं सकता, चलो मेरे लिए तो है नहीं. You have to learn something. पैदाइशी सब कुछ कोई सीख के नहीं आता है. Everyone has to learn something or the other. Some learn the hard way, some learn the easy way. और अगर आप जब तक आपने वो कोई चीज़ करी नहीं है, हम बोलते हैं कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है. यू नेवर नो, आपने वो चीज़ कभी ट्राई ही नहीं करी है, तो आपको पता कैसे पड़ेगा? हाउ वुड यू नो दैट यू लव इट और नॉट? यू जस्ट ट्राई सम स्किल, go out on the Skillshare, go out on the internet. There are tons of options available to learn a new skill. Go out, learn in the process. If you enjoy learning it, if you enjoy doing it, continue it. If you don't enjoy it, just quit it and move it on the next thing. There's just not one thing available in this universe कि
बस यही एक दो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि एक इंसान कर सकता है। इंसान बहुत चीज़ें कर सकता है। इट्स like being born as a human is one of the greatest assets you have. Make use of it. So the first and foremost would obviously be knowing how to code. If you know how to create a website or app, you can freelance for many small clients and gradually level up. You can go and register yourself on freelancer.com and start. If you अगर आपको coding आती है, or if you don't know coding, or if you just have learned coding, or even if you're in college first year second year, आप छोटी छोटी फ्रीलांसिंग बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनको चाहिए होते हैं बहुत बेसिक फ्रीलांसर्स में भी जो कि फ्री में काम कर रहे हैं या फिर जो कि मिनिमम वेज में काम कर रहे हैं. नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड कैन अफोर्ड paying hefty fees to more professional web designers. If you are a rookie, if you are an amateur, just go out and work for free. First year में, second year में either charge minimum or work for free. Just ask them for a review or the certificate from that side. That will help you in your academics, in your resume and in your future. मतलब आपके लिए काम ही आएगा यार. और आपको स्किल सीखने के लिए don't learn a skill कि मैं कल पैसे कमाने शुरू करूँगा. Learn a skill to level up. Once you level up, once you have something which you can put on the table, then only the people will pay you value. कोई भी ऐसे ही आके आपको नहीं दे देगा. आपने कोई भी एक आप क्योंकि आप कोई भी नई स्किल सीखने जाओगे, कोई भी आप नई स्किल सीखोगे, you won't be perfect at number one. मैं जब अब ये शुरू में वीडियोस डाल रहा हूँ, even I am not perfect. बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, बीच में रुकता हूँ. ये तो आपके सामने जो आता है वो एडिट होके आता है सब कुछ. If you watch a behind the scenes video, it's a complete lengthy video where there is sometimes silence, where I look at the script. Sometimes मैं बोलते बोलते फंबल हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ, कुछ हो जाता है, सांस फूल जाती है. Like there are many things. So you get better as you do it. So just try it out. अगर आप कोड करना जानते हो, freelancer.com पे जाके रजिस्टर करो, फ्री में काम करो, मिनिमम वेज पे काम करो, स्किल अप करो एंड जस्ट स्टार्ट अर्निंग. यू नो इट्स गुड. आपको पसंद आता है तो करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्किल पे मूव हो जाता है. दो चीज़ों को मैं एक ही कैटेगरी में कंबाइन करूंगा, विच आर बग बाउंटी प्रोग्राम्स एंड हैकाथॉन्स. बग बाउंटी प्रोग्राम्स आर रन बाय many major companies of the world, which are Amazon, Flipkart, Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Microsoft, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपनी वेबसाइट पे बग बाउंटी प्रोग्राम्स रन करती है. So if you are into hacking, if you are interested into getting behind the scenes of a program and seeing all the codes and taking a bug out, या फिर अगर उसको आपको हैक करने की इंटेंशन है, ethical hacking I'm talking about. Ethical hacking अगर आपको वो करने की इंटरेस्ट है, वो अंदर आपकी क्यूरियोसिटी है, so you can go out and participate in bug bounty programs where you find a bug in their software and they pay you very handsomely well. कोई बहुत छोटी कंपनीज हैं जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स करती हैं. You do not always get FANG companies obviously, और कई छोटी छोटी कंपनीज भी बग बाउंटी प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करती हैं. और उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज आपको पे करेंगी. सम विल गिव यू सर्टिफिकेट, सम विल गिव यू अ मिनिमम अमाउंट, बट इवन अ सर्टिफिकेट इज वर्थ इट. कुछ भी करो, कुछ नहीं, अगर पैसे नहीं देने तो सर्टिफिकेट दे दो. यू कैन ऐड दैट इन योर रिज्यूमे. आपकी स्किल अप ही होती है इन चीज़ों से. हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करी जाती है. स्किल्स होंगी तो कल आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे. स्किल नहीं होगी, नो मैटर व्हाट यू डू, यू डोंट हैव स्किल, यू आर नॉट पुटिंग आउट अ गुड वैल्यू आउट देयर ऑन द टेबल, पीपल विल नॉट पे यू. एज सिंपल एज दैट. बग बाउंटी प्रोग्राम्स एंड हैकाथॉन्स में you learn team, you learn how to work in a team, you learn how to work in a leadership. You know, you collaborate with other hackers and other programmers and other coders and you work as a team to win the hackathon की prize money काफी ऊंचे होते हैं. बहुत अच्छी hackathons होती हैं. You can just look out on the internet and go find out which one suits you. Number 4 would be affiliate marketing. मैं Amazon affiliate या Flipkart affiliate की बात नहीं कर रहा हूँ because obviously उनके payouts बहुत ही कम होते हैं, 2%, 5%. हाँ, that is good as in मतलब आपको थोड़े पैसे आते रहे, आप affiliate कर रहे हो. But if you want to earn big, if you want to take the big bite, you have to go international. Either you can go on ClickBank and manage the website as ClickBank, where you can affiliate international products, where you can affiliate international product to your audience. But before going for affiliate marketing, please note that I have already made a video about what affiliate marketing is for as a beginner. So if you are into affiliate marketing as a beginner, आपको सबसे पहले ये चीज़ जानने की जरूरत है कि आपको ऑडियंस चाहिए होगा. affiliate marketing आप उन्हें करते हो जो आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए. आप affiliate करोगे, you are a rookie, you are a beginner, who will you affiliate? Like आपकी लिंक से कौन खरीदेगा? Who is there? So first you need an audience. Either you build a blog or you build an audience to whom you can affiliate. So affiliate marketing का फंडा ये है. Moving on, write ebooks or you can write notes and sell them on Amazon Direct Publishing or even Gumroad.com. अगर आपने Gumroad.com के बारे में सुना है, so it's a website where you can just list all your ebooks or your any digital product. You can list it over there and people can buy it as low as $1, $2. आप अपनी ebook, अगर आपको कुछ आता है, कोई भी स्किल आपको आती है या
any knowledge you have, you can go out publish a book, और या फिर छोटे से notes बना दो अगर आपकी हिम्मत नहीं है, या if you are not that very well informed that you can write the 100-page or 150 or 90-50 page book, तो आप जाके उसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, या किसी भी चीज़ के नोट्स बना सकते हो। अगर आप स्कूल में हो तो आप अपने स्कूल लेसन के नोट्स बना सकते हो, अगर आप कॉलेज में हो कॉलेज के नोट्स बना सकते हो, IIT JEE में जाते हो IIT JEE के नोट्स बना सकते हो। इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द IIT बॉम्बे ना, if you go to any of the IITs in India, you can make notes, or if you're anywhere in the world or anywhere, whatever you do, if you have anything to share, you can make notes and upload it on gumroad.com or Amazon Direct Publishing, फिर obviously books publish करनी। यार कोडिंग से एक चीज़ और याद आई कि एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली, मैंने पढ़ा था ना, रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को पढ़े हुए, कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी होता है, if you know coding, how to code and how to do computer programming और engineering, कि SpaceX के थ्रू एलॉन मस्क ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया था फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिसके फाइनल राउंड तक पहुंची थी हमारे इंडिया के किसी पुणे या बॉम्बे या फिर किसी साउथ की यूनिवर्सिटी, एक टीम थी who was qualified till the final of that round, and that round was कि अगर आपने हाइपरलूप के बारे में सुना होगा, जिसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब के अंदर द पिस्टन विल just rush at a very high speed, जिसके कारण से you can reduce the transportation time between point A to point B। इसके लिए उन्होंने बस एक छोटा वर्जन स्टूडेंट्स को बनाने के लिए बोला था, just to solve the problem कि एक पिस्टन के अंदर how can you produce so much of energy without any much acceleration through a motor, कि आप इतनी हाई स्पीड पे रन कर सको विदाउट टचिंग द ग्राउंड और विदाउट टचिंग एनी रेल, सो दैट आपका ड्रैग कम हो और आपका फ्रिक्शन कम आए। तो इस पे भी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, आई हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन, वो बस मैं भी वीडियो बना रहा था, इसलिए मुझे एकदम चीज़ पॉपअप हो गई, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च भी नहीं करी। सो यू कैन लुक अप ऑन द इंटरनेट, ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऐसी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ऑर्गेनाइज करके आती है। यू कैन गो आउट एंड लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू वर एबल टू गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ इट, do hit the like button, do subscribe, and do comment. Let's interact, let's talk. If you have anything to say or any suggestions, go out in the comment section and